Hi students, I'm ANUJ JALOTA. This is a book tour of the books which you will be getting when you enroll for Paper 5, CA Final, SCMPE. You're going to be getting 4 books from our side. This is the first of the book that's there in front of you. This is our first book, that is practical book. In this practical book, we have tried to include every possible question that is there. It starts away with a preface, why this subject is there, what is the current situation of our country. Because this subject is all about business. So what is happening to the businesses before COVID, then after COVID, I've tried to explain. That gives you a good idea of where our current business scenario is. I've included some study tips for you all over here, which will help you to get good marks SCMPE if you follow them. Then we have an index over here. Now this index that is there in front of you right now is consisting of 33 chapters. In module there are 12 chapters which I have arranged them in a manner. So therefore it is in the best possible order of your studies. These 33 chapters, many new chapters have been added. Apart from that, chapter number 33 is one of the most unique features of this book, whereby any question that involves more than 2 chapters, such questions are put towards the end. और आपके इंडेक्स के अंदर लिखा भी हुआ है that each question is merger of which 2 chapters. Once this is done, then I have something that in my book I call as point zero. What is this point zero? This point zero consists of all the terms that as a businessman you all should be knowing. Top line, then bottom line, value chain, TQM. ये सारे टर्म्स मैंने शुरू के अंदर वो रखे हुए हैं. हम लोग हर लेक्चर के अंदर 1 या 2 टर्म्स को सीखेंगे ताकि आफ्टर फ्यू चैप्टर्स यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स एंड यू कैन यूज देम इन योर कमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के ना आप लोगों को कमेंट्स जो है वो वाला काम आपको करना पड़ेगा. सो देयरफॉर यू शुड बी फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ टर्म्स. सो सारे टर्म्स इकट्ठे नहीं सीखेंगे. एवरी लेक्चर 1 or 2 टर्म्स वी विल बी लर्निंग. फिर उसके बाद these are do's and don'ts which are there. All these things in case you're going to be doing, that will help you a lot in your examination. I've left space for any new terms जो अपने syllabus के अंदर आ सकता है. All those terms we will be noting down over here ताकि in end you have a good list of all the terms जो आप लोगों को examination के अंदर use करना है. Okay. फिर उसके बाद आप लोग के जो chapters हैं start हो जाते हैं. Many chapters will get ended by such kind of a box which is there on left hand side which summarizes the entire chapter. प्लस हर चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट्स टू रिमेंबर वगैरह था वो मैंने चैप्टर्स के एंड के अंदर डाल के रखा हुआ है. आपके हर चैप्टर के अंदर जो कवरेज है दैट इज द मोस्ट यूनिक कवरेज. इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द फ्यूचर क्वेश्चंस आल्सो जो एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं. आई हैव ट्राइड टू यूज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई हैव ट्राइड टू पुट ऑल दोस क्वेश्चंस, ऑल्दो जो अभी मॉड्यूल्स के अंदर भी नहीं है. नाउ इसके बाद इफ यू विल बी स्क्रोलिंग अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन जो हम लोग क्लास के अंदर वो करने वाले हैं, what we all have done, there are many questions that I've kept for homework. Okay, now these homework section questions which are there have got few unique features. Example, if you check over here, कोई भी क्वेश्चन अगर होमवर्क का होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर होमवर्क का होगा, उसका फाइनल आंसर यहां पर है. कितना साइड्स आपको छोड़ना है वो यहां पे है. आपको कितना टाइम लगना चाहिए टू सॉल्व, जैसे यहां पे लिखा हुआ है टाइम रिक्वायर्ड इज 15 मिनट्स. ओके, जब आप खुद ब खुद घर में ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों को कितना टाइम लगना चाहिए वो यहां पे है. नाउ दिस इज माय कैलकुलेशन जहां पे आई हैव ट्राइड टू कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर आपका उस टाइम के अंदर हो जाएगा, एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा. इन केस यू स्टिल डू नॉट गेट द आंसर, फुल आंसर विल बी अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट. मैंने हर क्वेश्चन को जैसे यहां पर एक टाइटल देने का भी ट्राई किया है, वेयर बाय उस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट वो इन्वॉल्व है, दैट थिंग इज प्रिंटेड. उसका एक एडवांटेज टुवर्ड्स द एंड व्हेनेवर यू आर स्क्रोलिंग, अगर आपको कोई एक सब टॉपिक याद आया एंड यू वांट टू बी थिंकिंग वो वाला सब टॉपिक वो किधर है, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द थिंग सुपर फास्ट. माय एम वाज ओनली वन, टू ट्राई टू सेव एज मच टाइम ऑफ योर्स एज पॉसिबल एंड टू डू दैट वन एक्स्ट्रा थिंग दैट विल बी गिवन टू यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पोर्शन. हर एक क्वेश्चन का एक समरी विल बी देयर विद यू. There will be a video and there will be summary notes for each and every question that we are going to be doing. तो end के अंदर in case you want to be having a recap super fast, तो आप लोग को हर एक लेक्चर का एक समरी वो दिया जाएगा with the notes also. वो नोट्स धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स वो बढ़ते जाएंगे, those notes will also keep on getting added with the help of the new questions. So by the end of your syllabus, you will be having every kind of a summary with you all. This is your first book which we are going to be using to cover up all the types of questions which are there for your syllabus. Now book 2.
This is the second book out of the 4 books that you all will be provided. I call this as a workbook. Workbook to your book 1. आपके बुक 1 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे कमेंट्स रन इनटू पेजेस. वंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस कमेंट्स, देन आई विल टेल यू रेफर पेज नंबर दिस ऑफ द वर्कबुक. प्लस मेनी क्वेश्चंस जहां पे अपने को बहुत सारे फॉर्मेट्स भी बनाने पड़ते हैं. ऑल दोस फॉर्मेट्स विल बी प्री प्रिंटेड ओवर हियर, सो देयरफॉर वी कैन डू द क्वेश्चंस स्लाइटली फास्टर. My main intention when I do make the book is that I try to cover maximum content for you all in the shortest possible time. Okay, so all those things are over here. Many things are pre-printed. Plus there was a new chapter that was added called as corporate reporting redefined, whereby integrated reporting and GRI standards have come. That is also included in this book. Apart from that, I have one unique feature that I would definitely like to tell you, and that is nothing but a report card over here. Towards the end, I've given you all a study plan, जहां पर जब आप revision कर रहे हो for the first time, okay? तो what you all should do, अगर कभी lectures के ना कुछ miss वगैरह हो गया था, then all those things का record you all can keep at one single place, ताकि if something is ever missed out, you all know that. उसके बाद अगर सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हो, देन व्हाट शुड बी रिवाइज, दैट इज ऑल्सो ओवर हियर. थर्ड टाइम व्हाट शुड बी रिवाइज, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ चैप्टर्स विल फॉल. ओके, तो टुवर्ड्स द एंड इन दिस केस यू कैन ओनली ट्राई टू बी रिवाइजिंग दिस से ऑन द लास्ट डे, तो ऑटोमेटिकली योर रिविजन विल स्टार्ट टू बी हैपनिंग. दिस इज योर सेकेंड बुक. यहां पे मैंने 5 एक्स्ट्रा केस स्टडीज भी रखा हुआ है जो आईसीए ने वो लेटली इंट्रोड्यूस किया था. ओके, दिस इज अबाउट बुक 2. आई विल स्टार्ट अवे विद योर नेक्स्ट बुक. That is book 3, and that is one of the most unique books, case study and theory book. This is our third book, and this is your case study and theory book, a fully colored book that covers up every case study asked by the institute. Now, in this book, there are a lot of things that we all have done that makes this book super unique. And first thing out of them is your master index. This master index gives you what? हर एक क्वेश्चन का यहां पर मेंशन है और उसका पेज नंबर मेंशन है. तो कोई भी टॉपिक जो भी आपके पास है, कोई भी टॉपिक, अगर आपको वो वाला चीज ढूंढना है, चैप्टर के अंदर जाइए, क्वेश्चन वो ढूंढिए, उसके सामने पेज नंबर है, डायरेक्टली यू कैन गो देयर. फर्स्ट, सेकंड, हर एक केस स्टडी किस चीज के ऊपर है, वो इंडस्ट्री का नाम है और वो केस स्टडी क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर राइट इन द मास्टर इंडेक्स ओनली. So towards the end, this book becomes a super easy book for you all to refer. Everything that you all can require, okay, to save your time, all those things I have incorporated right in the master index. Now, this book consists of the theory. Then all the case studies of that chapter are included right over there only. ICA might have compiled them in a separate way up and so on. I have included them right in the chapter. So once you do the theory of that chapter, do the case studies part of that, and your job will be all done. I guess you all know that case studies come around for 20 to 30 marks. Then I have given a weightage of the marks over here. I've given skill wise weightage also. And then once this is over, then your chapters will be starting. Your chapters, all questions will be in brown color, all answers will be in blue color with suitable heading colors, that the same pattern you can try to see in your entire book. So slowly you will start get used to these colors. There's a certain meaning that is attached. Wherever charts are possible, those charts are also put, like you all can see here. And the content has not been entirely copied from the institute. Wherever the language of ICA was simple, that I have tried to take. Like most of the things I've tried to be changing based upon how you should be writing in exams. After each and every chapter, as I told, there is a case study. In case studies, I have written case study number along with whatever is the topic. Then the industry I have written over here, like this is a question on retail sector, so on and so forth. So everything that is required to be done is all included over here. Wherever charts are possible, that is also done. And one thing till now we all have done on the Telegram channel only, and that is हर chapter का एक summary chart है, which is there on a Telegram channel. So there are 12 chapters, there are 12 charts over there. So if you want to be revising your theory the fastest, then in that case you can download those charts from there. That will help you to recap all your chapters fast. This is your third book that you get with your SCMPE regular course 16th edition.
I'll take you to the last book that is there. I call that book as Blast from the Past. So here we have our last book, Blast from the Past. This book is all about what? These are all past papers of ICAI, which I have compiled. But when I have done the compilation, few things I have done. So therefore you can test yourself with the help of this book, whether you all know the content or not. Now, in this book, what I have done, questions are different. Answer papers are different, unlike the institute whereby answer follows the question. So I've kept them in a separate way. Now, when this book is being used, मैंने हर क्वेश्चन के बाद यहां पर लिखा हुआ है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग खुद ब खुद ये वाला चीज ट्राई करोगे, आपको कितना टाइम हर क्वेश्चन के लिए लगना चाहिए. लाइक यू ऑल कैन सी दिस क्वेश्चन शुड टेक 25 to 35 मिनट्स ओवर हियर. तो इतने टाइम के अंदर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एंटायर पेपर. ऑल्सो हर क्वेश्चन के लिए आई हैव डन दैट. Once your answers do start, okay, so from here your answer starts. शुरू में there is a mini index कि हर क्वेश्चन जो था आपके कौन से चैप्टर के अंदर से था. एंड अगेन वन थिंग दैट आई हैव कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो देयर इन दिस इंडेक्स. Now the answers I have not copied from the institute because many of the answers since 2018, since the time new course had come, okay, were printed wrong. So wherever I say was wrong, all those things I have corrected. Apart from that, I have given the answers in the way that you all should write in exams, in our style, the way that we all do it, because many times the student face this problem. Sir, उन लोगों ने क्वेश्चन का जो presentation है वो ऐसा किया, तो हम लोग को भी वैसा ही करना है. It's not like that. So I have done the presentation based upon how the presentation can be done in exams also. This book is mainly useful for all those students who want to be practicing the past papers, okay, but don't want to be referring the solutions of the institute because they might not exactly tally way by way how we all solve them in class. This is your last book. I hope that you have enjoyed this book tour. Do spread this to the students also who wish to be joining SCMPE. I assure you for one thing, you get the best content, you get the maximum content, you get entire things that can be asked in the examination, and most important, this subject I will always try to be doing the way that you should do your own business. So if you are going to be interested in running your own business in future, or if you're going to be handling somebody else's business, then this subject is made for you. It helps you to earn money in life. Thank you. Bye. Take care.